Okay, so can you hear me now too? Is that a yes? Okay, so you can have your questions in the typing field, in the chatting field. So ask me any question. Well, that an overview is there's two sections, section one and section two. हिस्ट्री में सबसे पहले तो मैं सिल्क लेटर मूवमेंट नहीं है वो सिल्क लेटर मूवमेंट है वो आई कम बैक टू यू अगेन लेकिन वो सेक्शन वन एंड सेक्शन टू section one is from the religious reformers till the languages, and section two is from the partition of Bengal till Jinnah as the Governor General of Pakistan. So उसकी achievements and the problems and all that. So सबसे पहले religious reformers को देखते हैं. Religious reformers के अंदर तीन religious reformers हैं हमारे पास, चार to be exact, जिसके अंदर पहला है हमारे पास शाह वलीउल्लाह. Then we have Sayyid Ahmad Shahid Barelvi, Haji Shariatullah and Tituli. So majorly अगर कोई क्वेश्चन आता है CIs में भी या तो उसके अंदर क्वेश्चन आपको आएगा, फॉर एग्जांपल हु वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. कोई एक सवाल के अंदर दिया होगा और आपको उसको आंसर करना होगा. सो इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से इफ यू नो whatever had these religious reformers achieved, so be specific in whatever you are learning. अगर इस रिलीजियस रिफॉर्मर्स के अंदर आप सिर्फ अचीवमेंट्स याद कर लेते हैं चारों की या whatever they have done, तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं. सो whatever they have achieved, फॉर एग्जांपल शाह वलीउल्लाह के बारे में लिख सकते हैं कि ये ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू the Persian language for the very first time and named it as Fatehur Rahman. He was the principal of Madrasa Rahimia, and then he wrote 51 books, 28 Persian, 23 Arabic. Izalatul Khafa, Hujjatul Balagha, ये इसकी दो इम्पोर्टेंट किताबों का नाम है. Then he called upon Ahmad Shah Abdali to save the Indians from the Jats, Marathas and the Shiites. So उसका वो जो लेटर था जो उसने डिफरेंट उसको लिखा था, वो सफदर जंग को भी लिखा था उसने इन अवध. And then he wrote a letter to Ahmad Shah Abdali in Afghanistan. अफगानिस्तान को लिखा था सफदर जंग के बारे में और जाट्स के बारे में. ये पाकिस्तान के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर they are involved or indulged in the different problems. So इस लेटर की बात आप कर सकते हैं. उसके बाद आप you can say कि आप इन्होंने शिया और सुन्नी के डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश की.
Then he tried to bring, then he was of the opinion that the businessmen have, uh, they have to act in a way that their practices should involve realities, and they should not go into extravagant amount of the money they should not spend on the different occasions, और जो इनका प्रॉफिटेरिंग है वो भी बहुत जायज होनी चाहिए. So then you come about Shah Waliullah, Sayyid Ahmad Sheikh Brelvi, उसकी जिहाद मूवमेंट के बारे में बात करें. So be very specific when you are talking about the jihad movement. I have already told you, yes, I can. I've already told you that whenever you talk about anything, you have to do that in specific. क्योंकि 64% आपका यहाँ पे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 काउंट होता है. तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 अगर आप उसका जिक्र नहीं करेंगे, अगर उसकी बात नहीं होगी, अगर वो स्पेसिफिक डिटेल्स की बात नहीं होगी, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. देन यू टॉक अबाउट हाजी शरीयतुल्लाह, उसकी जो मूवमेंट थी फराइजी मूवमेंट, उसकी बात करें, और फिर टिटू की बात करें. नाउ यू कम टू द मुगल डिक्लाइन. मुगल डिक्लाइन के सिर्फ रीजंस याद करें कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ द मुगल डिक्लाइन. पहला रीजन, इनएफिशिएंट एंड लग्जरी ओरिएंटेड सक्सेसर्स. सक्सेसर जो उनके थे वो बहुत लग्जरी ओरिएंटेड थे. दे वर नॉट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन. उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उनके वजीर चला रहे थे, तो दे वर पैसिव रूलर्स, दे वर नॉट एक्टिव रूलर्स. अहमद शाह रंगीला की बात कर लें आप, मोहम्मद शाह रंगीला की बात कर लें आप, कि वो बहुत पैसिव रूलर था, और जब नादिर शाह अफशार ने यहाँ पर हमला किया और दिल्ली में आ पहुंचा, इवन देन ही वाज नॉट ऑफ द व्यू कि उसको दिल्ली को बचाना है, एंड फाइट नादिर शाह अफशार. Yes, Shah Waliullah was the most important, that is right, because his teachings were not confined into a single locality. अच्छा, फिर जी inefficient rulers, वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी जब भी कोई रूलर मरता था, उसके बेटे जो थे वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते थे. इसके पर नाम लिखें जहांदार शाह का, या उन तमाम औरंगजेब के बेटों का नाम लिखें. उसके बाद औरंगजेब का जो चार औरंगजेब ने जो अपने भाइयों को मारा, उसका जिक्र करें. सो बी स्पेसिफिक. Then you have to talk about the Persian invasion. Then you have to talk about Ahmad Shah Abdali's invasion from 1747 till 1762. Then you got to talk about Mansabdari system in India. Then you have to talk about the मनसबदारी हो गया, और उसके बाद अब रह गया है जी यस ब्रिटिश स्ट्रेंथ. अगर ब्रिटिश स्ट्रेंथ जो है वो ना होती तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. और मुसलमानों का एक ख्याल बहुत अरसे तक रहा कि अगर ब्रिटिश यहाँ पर ना आते तो शायद मुगलों का दौर जो है वो बहुत आगे तक रहता. इट वाज वन ऑफ द good great reasons that the Muslims have failed in the Indian subcontinent was because of the British rule in India. So ये 5-6 reasons आपने डिस्कस. 14 नंबर का सवाल आए तो एक वो रीजन डिस्कस करें जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करें. फिर कोई से 3 काउंटर आर्गुमेंट्स दे दें एंड कम टू अ कंक्लूजन. yes you can write that too. एक दिन में सारा सिलेबस कवर नहीं हो सकता. I'm not a machine, but I can give you an overview. अच्छा, उसके बाद है जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाट आर द रीजंस द फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. व्हाट आर द रीजंस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये 2 तरह के सवाल आते हैं. रीजंस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर जो आंसर्स हैं, 2 तरह के आंसर्स हैं उसमें. एक लॉन्ग टर्म रीजंस हैं और एक शॉर्ट टर्म रीजंस हैं. जो लॉन्ग टर्म रीजंस हैं वो उनके रिफॉर्म्स की बात करेंगे. जो शॉर्ट टर्म हैं उसके अंदर आप ग्रीस कार्टरेज की बात करेंगे. उसके अंदर आप अवध को जो उन्होंने अनेक्स कर लिया उसकी बात करेंगे. तो यू सी यू कैन टॉक अबाउट दीज. फिर आप ये बताएंगे कि जनाब जो सीपॉइस थे उनकी सैलरी कम थी, उनको उनकी सैलरी कम थी
اور ان کی سیلری لو تھی، پھر وہ افغانستان میں بھیج دیا جاتا تھا ان کو، اینڈ وہ کہیں باہر نہیں جانا چاہتے تھے، اپنے ملک میں رہنا چاہتے تھے، ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا آفیسر رینک تک. تو یہ جو ہے تھا. پیپر آسان آئے گا. پیپر کا ٹرینڈ لکاس میں یہ ہوتا ہے کہ 2023 آن بیکورڈز آپ جائیں، پاس پیپر میں سے سوال بنتے ہیں. تو پاس پیپر کریں اکتوبر نومبر مئی جون کا، 2022 کا پورا کریں دونوں اکتوبر نومبر میں، یعنی اکتوبر نومبر کا بھی اور مئی جون کا بھی. آپ 14 مارک کے کوشچن کو مواز اٹمپٹ ایسے کریں گے. یہ گیس پیپر ہی دیا ہے میں نے آپ کو. یہ فرسٹ آف then you'll be talking about whatever is mentioned in the question, and then you'll be talking about the counter arguments. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دے دوں کہ فار ایگزامپل شاہ ولی اللہ کے اوپر سوال آ جاتا ہے کہ واز شاہ ولی اللہ the most important religious reformer in the Indian subcontinent? Do you agree? Explain your answer. So اس کے اندر آپ نے 10 مارک کا ہو یا 14 مارک کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ تو پہلے ایک جنرک اسٹیٹمنٹ دیں there were many religious reformers in the Indian subcontinent. اس کے بعد آپ بات کریں شاہ ولی اللہ کی کیونکہ وہ انڈیکیٹڈ تھا اسٹیٹمنٹ کے اندر. اینڈ دین یو ٹاک اباؤٹ the different other reformers جس کے اندر احمد ہے. So this is how you'll be talking about. ٹھیک ہے جی. تو اندر آپ شاہ ولی اللہ کو کنکلوڈ کریں گے. کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا 10 مارک اور 14 مارک کے کوشچن کے اندر. دونوں کمپیریٹو ہوتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے کرنے ہوتے ہیں. اور کچھ سوال؟ گیس پیپر جو ہے نا اس کے لیے نہیں بتائے جا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ پہلے 9th کو کیا پیپر آیا ہے ان کا. تو آئی ڈونٹ نو دیٹ. تو اگر اس کا کوئی ریکارڈ ہو یا پاس پیپرز ہو تو گیسٹ پیپر بنایا جا سکتا ہے. اس طریقے سے گیسٹ پیپر نہیں ہوتا. مشکل ہے. میرے 6 سال کے تجربے میں لکاس کے آج سے پہلے تو اس طرح سے کبھی نہیں ہوا کہ وہ اس طرح کا کوئی اس سے ملتا جلتا پیپر بنا دیں. تو موسٹ شاید ایک آدھا سوال دے بھی دیں تو آپ چوائس میں چھوڑ سکتے ہیں. 5 سوال ہوتے ہیں جس میں پہلا کمپلسری ہوتا ہے اور باقی 4 میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں. وہ آپ اس میں بھی چھوڑ سکتے ہیں چوائس میں. باقی موسٹلی پاس پیپر میں سے ہی آتا ہے. اینڈ آئی تھنک مرسلین واز ٹیلنگ می کہ ان کا اکاؤنٹنگ کا پیپر 2023 اکتوبر نومبر کا آیا ہے. سو اس طریقے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طریقے سے وہ پاس پیپر کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہ ساتھ آپ کو اگر 4 مارکس اور 7 مارکس کوشچن آتے ہوں تو آپ ایزیلی اٹمپٹ کر سکتے ہیں 14 مارکس. لکھنؤ پیٹ 1916 کے اندر ہوا تھا. اینڈ دیٹ واز the first and the last, not the last, the first and the successful attempt of uniting both the Muslims and the Hindus together. قائد اعظم محمد علی جناح اس ٹائم کے اوپر he was both the part of Indian National Congress and All India Muslim League, and he wanted to join the hands together so that we can pressurize the British, and the British then can go out from India. یہ وہ وقت تھا جب ورلڈ وار 1 جاری تھی آن تھی. that was going on, and that was a right time to hit the iron. اور انہوں نے کیا کیا کہ انڈینز نے ان کو برٹش کو پریشرائز کرنے کے لیے they joined hands together, اور اس کے اندر ڈفرینٹ باتوں کے اوپر کمپرومائز کیا ہندوؤں نے مسلمانوں کی. جیسے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ پہ 1/3 ریپرزنٹیشن پہ اور مسلمانوں کے ڈیو رائٹس کے اوپر. یہ وہ 2 میں نے کلوزز آپ کو بتائی ہیں جو کہ اس کے بعد ہندوؤں نے کبھی مسلمانوں کی نہیں مانی. لیکن یہاں پر اس لیے مان لی گئی کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے موٹیویٹ کیا ہندوؤں پہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں گے تو اٹ وڈ بی ایزیئر فار اس ٹو
to get the self independence. तो और कायद आज़म को इसके बाद सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल भी दिया था। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर 1919 में हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं इसको। जॉन क्या नाम था इसका, लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड क्या नाम था इसका, नाम मेरे दिल से निकल गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और लॉर्ड मॉन्टेग्यू Montague Chelmsford. So Lord Montague Chelmsford was the person who did all this. And इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये कि इससे पहले तक इंडिया के अंदर एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, यानी कि सिर्फ एक हाउस था. That was the first time to have introduced the uh, the bicameral legislature. So this was the first thing to have introduced that. And then ये पहली बार हुआ bicameral legislature. एक upper house होगा, एक lower house होगा. Upper house would be called as the council of state. The lower house would be called as the house of representatives. फिर डायरेक्टली को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर, जिसके अंदर दो सब्जेक्ट होंगे, रिजर्व सब्जेक्ट होगा और ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे. Reserve subject would be called as all the important subjects, all the important portfolios would be given to the British governors, and like defense, finance, police, and all that. And all the unimportant subjects would be called as the transferred subjects, and these subjects would be given to the Indian ministers. So uh, this was the attempt of ruling the Indians through diarchy. तो डायरकी का मतलब होता है रूल ऑफ टू. तो जिसके अंदर दो तरह के सब्जेक्ट्स को दो तरह की वेरिएशंस के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, और जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे वो ब्रिटिश ने रिटेन किए, और जो अनइम्पॉर्टेंट थे वो इंडियंस को दे दिए कि आप इसके ऊपर लेजिस्लेट करें, आप इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करें, वी हैव नो प्रॉब्लम्स. उसके बाद जी इंडिया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा. सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं दिया बल्कि सिखों को भी दे दिया, और वोटिंग राइट्स को इंक्रीज करके 5 मिलियन तक कर दिया गया, और एक लास्ट क्लॉज रखी गई कि हर 10 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू होगा. सो मुसलमानों ने और हिंदुओं दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया, क्योंकि जो सेल्फ इंडिपेंडेंस की हमारी डिमांड थी वो इससे पूरी नहीं हुई. दूसरा उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने हमें डिसीजन पावर हमारे हाथ में नहीं रखी. ऑल द इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज आर वेस्टेड इन द ब्रिटिश गवर्नर्स. ब्रिटिश गवर्नर्स के पास वीटो पावर भी है, उनके पास इमरजेंसी पावर्स भी हैं. तो ये सारी पावर्स भी आपने ब्रिटिश को दे दी हैं, और हिंदुओं के पास सिर्फ एडवाइजरी पावर्स हैं. तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. दूसरी बात यह है कि अंदर से दो Hindu Muslim unity phase was going on at that time, but the Hindus were not of the idea that there should be the division of the Indian communities through separate electorate. वो separate electorate के through Indian community की division नहीं चाहते थे. So these were some of the of the controversies or the rejection points. अल्लामा इकबाल और चौधरी अहमद अली के लिए कहा जा सकता है कि जी व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ चौधरी अहमद अली. इसके ऊपर 14 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज मोर इम्पोर्टेंट, अल्लामा इकबाल और चौधरी अहमद अली. 10 मार्क का भी आ सकता है. तो अगर आपको इन दोनों की इम्पोर्टेंस का पता है, फॉर एग्जांपल 1920s के अंदर अल्लामा इकबाल क्यों इम्पोर्टेंट था, 1930s में क्यों इम्पोर्टेंट था, डेट्स के साथ आपने याद रखना है. 1922 के अंदर उन्होंने जो था उनको सर का टाइटल मिला था. 26 के अंदर पंजाब असेंबली में इलेक्ट हो गए थे. 27 के अंदर
وہ جنا لیگ میں چلے گئے تھے. 1930 کے اندر الہ آباد کا ایڈریس دیا تھا. He was a poet, he was a philosopher, he was a lawyer himself. Then he represented the Muslims in the roundtable conferences as well. And he was the one who had given an idea of the separate independent state for the Muslims. And whatever the idea presented after 1930s, whether it was Chaudhry Ahmad Ali's idea of Pakistan, or in 1940 a new state for the Muslims, the idea of A.K. Fazlul Haq and Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, it was based upon the idea of Allama Muhammad Iqbal. So that was the importance of Allama Iqbal. Chaudhry Ahmad Ali Now or Never लिखा था, उसके अंदर कंट्रोवर्सी भी थी, यार वो लिख दीजिएगा जो उस बंदे के साथ थी, जो उस बंदे ने कहा था, क्या नाम था उसका, I forgot the name, you can see that in the notes. तो वो एक कंट्रोवर्सी की बात करें, पाकिस्तान के जो एक्रोनिम्स हैं उसकी बात करें, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट स्टेट की बात करें, जो चौधरी अहमद अली ने भी उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, बट एज एन ऑब्जर्वर. दैट्स हाउ यू बी राइटिंग दिस. क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जनाब गांधी ने शुरू की थी 1942 के अंदर, और 1942 के अंदर भी वर्ल्ड वॉर 2 जारी थी. तो गांधी को ये लगा कि ये राइट टाइम है और हाई टाइम है ब्रिटिश को प्रेशराइज करने के लिए. सो दे प्रेशराइज द ब्रिटिश और बाय आस्किंग देम टू क्विट फ्रॉम इंडिया. लेकिन इसने जब अपने एनुअल सेशन के अंदर, वर्किंग कमेटी के एनुअल सेशन के अंदर जब ये नारा लगाया, जिसके बाद तकरीबन तमाम 60,000 की जो लीडरशिप थी, नॉट ओनली फ्रॉम द फेडरल लीडरशिप बट from the provinces as well, they were captured and they were imprisoned. तो गांधी ने फिर जेल से ही डिफरेंट कम्युनिटी से बात करना शुरू की कि वो इस क्विट इंडिया मूवमेंट का साथ दें. So firstly he asked the help from the business community. तो business community ने कहा जनाब कि हम क्यों हेल्प करेंगे when the war is going on, और war spending की वजह से हमें बड़ा फायदा हो रहा है, ब्रिटिश हमसे चीजें खरीदते हैं तो हमें उसका फायदा हो रहा है. So we will not support him. फिर इसने बात की सुभाष चंद्र बोस, जिसको नेताजी भी कहते हैं, उन्होंने अपनी एक इंडियन आर्मी बनाई हुई थी. उन्होंने कहा कि आप इस फ्रंट के ऊपर हमारा साथ दें और ब्रिटिश को आउट करें आप. तो उन्होंने कहा जनाब हम पहले ही बर्मा के फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं, तो वी कैन नॉट ओपन अ फाइट फ्रॉम 2 फ्रंट्स. अगर हम 2 फ्रंट्स के ऊपर एक लड़ाई शुरू कर लेंगे तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते. थर्डली जिन्ना ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया कि दिस इज अ फ्यूटाइल आइडिया. अगर ब्रिटिश यहाँ से चला जाता है तो फिर हम हिंदुओं के रहमो करम पे आ जाएंगे, हम हिंदुओं की मर्जी पे आ जाएंगे, और हिंदू फिर हमारे साथ वो करेंगे जो उन्होंने कांग्रेस रूल में किया था 1937 to 1939. The only acceptance of this Quit India resolution was from Franklin Roosevelt, who was the American president. उसने ये कहा था ब्रिटिश को, विंस्टन चर्चिल को, तो प्राइम मिनिस्टर था वो, कि जनाब जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाएं, बिकॉज अगर आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू होल्ड योर गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन एंड इन द इंडिया एज वेल. दुनिया के अंदर कॉलोनाइजेशन फेज जो था वो 1920s में खत्म हो गया था. सो अभी भी आप यहाँ से अगर चले जाएंगे तो दैट विल बी वे बेटर. सो इस तरीके से आप ये करेंगे. तो एक इसमें सिर्फ था एक्सेप्टेंस पॉइंट, एंड दैट वाज फ्रॉम फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, और बाकी सारे रिजेक्शन पॉइंट थे. अच्छा जी, आगे क्या है? सिल्क लेटर मूवमेंट ये थी जनाब के उलमा ऑफ देवबंद, जिसके अंदर 2 मशहूर उलमा, एक आलिम का नाम था महमूदुल हसन जो कि देवबंद के प्रिंसिपल थे, और दूसरे का नाम था उबैदुल्ला सिंधी. इन दोनों की आपस में लेटर्स की एक बाकायदा कम्युनिकेशन हो रही थी अगेंस्ट द ब्रिटेन टू सपोर्ट द टर्की एंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो पंजाब की सीआईडी ने ये लेटर्स पकड़ लिए जो कि रेशमी रुमाल के ऊपर लिखे जाते थे. ये इसी इसको सिल्क लेटर कहा जाता है. इसको उर्दू में तहरीक रेशमी रुमाल भी कहा जाता है. सो इन रेशमी रुमालों के ऊपर अपने ये पैगामात लिखकर भिजवाया करते थे,
اور الٹیمیٹلی جب یہ لیٹرز پکڑے گئے اور ان لیٹرز کا سیدھا سیدھا مقصد یہ تھا کہ برٹش کے اگینسٹ کانسپریسیز کی جائے، برٹش یہ جنگ ہار جائے اور انڈیا کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہو اور انڈیا انڈیپینڈنٹ ہو جائے برٹش کے ساتھ. یہ موومنٹ تھی. لیکن بعد میں محمود الحسن کو، عبید اللہ سندھی کو پکڑ لیا گیا، ان کو ایگزائل میں بھیج دیا گیا. عبید اللہ سندھی تو کبھی واپس نہیں آ سکے. محمود الحسن کو جو ہے وہ ٹی بی ہو گئی اور تو پھر ان کو واپس آنے دیا گیا اور پھر وہ یہاں پر آ کے فوت ہو گئے. ریاض حسین مدنی بھی میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر شامل تھے. ریاض حسین مدنی واز فرام جمعیت علماء ہند کے وہ صدر تھے. اور تو یہ تین بڑے نام ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں جو اس سلک لیٹر موومنٹ کے اندر انوالو تھے. اینڈ دیٹ واز ایکچولی اے کانسپریسی اگینسٹ the British government to oust the British from the Indian subcontinent. بیٹا ہاتھ ہونا میں نے کوئی نہیں رکھنا تاکہ آپ کو عادت پڑے کہ آپ کو کیسے سیاز میں پیپر چیک ہوتا ہے. سلک موومنٹ، سلک لیٹر موومنٹ میں نے بتا دی ہے. مصطفیٰ احمد، مین چیپٹرز میں نہیں بتا سکتا، میں آئی کین ناٹ گیس اٹ کیونکہ میرے سامنے پاس پیپرز وہ نہیں ہیں جو کہ اسکول میں ہیڈ آفس والے بھیجتے ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے. ایوری تھنگ از امپورٹنٹ. I might think کہ لینگویجز شاید نہ آئے بٹ دس از اونلی وٹ آئی تھنک. اور شاید سر سید احمد خان نہ آئے سیکشن 1 میں سے، اور سیکشن 2 میں سے مے بی فارمیشن آف مسلم لیگ نہ آئے، مے بی جو کیا کہتے ہیں منٹو مولے ریفارمز نہ آئے مے بی. لیکن سیکشن 2 کافی امپورٹنٹ ہے. اوکے مصطفیٰ بچے، اللہ حافظ. Muslim League was better in the second elections because of the extensive tours performed or done by Jinnah. Jinnah کو ایک تو ایکسٹینسو ٹورس کیے، جنہ کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلم لیگ کی پرابلمس کیا تھی. مسلم لیگ ہیڈ اے پرابلم آف امیج. لوگ سمجھتے تھے یہ صرف امیروں کی پارٹی ہے اور اس کی ممبرشپ فیس بہت زیادہ تھی، غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. سو گراس روٹ لیول کے اوپر انہوں نے برانچز کھولی، فیس کو کم کیا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے اندر لے کر آئے اور اس پارٹی کے اندر لے کے آئے. چیف منسٹر آف بنگال اور پنجاب دونوں پاکستان مسلم لیگ میں، آل انڈیا مسلم لیگ میں آ چکے تھے. اور قائد اعظم کا اسٹیچر جو تھا 1940 کے بعد، 23 مارچ 1940 لاہور ریزولوشن کے بعد اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اب جب کبھی بھی الیکشن ہوتے لوگوں نے قائد اعظم کے نام پر ووٹ دینا تھا. These were some of the reasons. 75 marks. 75 marks of history and 75 marks of geography. ہسٹری کے اندر پہلا کوشچن کمپلسری ہوگا اینڈ دیر ول بی 4 more questions جس کے اندر سے آپ نے 2 کرنے ہوں گے. سو اکارڈنگلی اپنا ٹائم جو ہے ڈیوائڈ کیجیے گا. ٹائم کنسٹرینٹ بہت بڑا کنسٹرینٹ ہے فار دا ہسٹری پیپر، سو ڈو ناٹ اگنور اٹ. اینی ادر کوشچن؟ واز آر یو دیئر؟ سیونٹی فائیو مارکس سی آئیز کا بھی 75 مارکس کا ہی پیپر ہوتا ہے، تو اس میں سے بھی تو پورا آ جاتا ہے نا. لینگویجز میرا نہیں خیال اتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے. لینگویجز 4 تو لینگویجز ہیں، وہ یاد کر لیں اسپیسیفک پوائنٹس اس کے. جیسے میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ سندھ کے لیے آپ یاد کر لیں کہ بزم طالب مولا، سچن سرمست اکیڈمی، پھر 1972 کے اندر سندھی کو
ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया था। एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है जो कि दैट डेट्स बैक टू द 12th सेंचुरी। इसका रस्मुल खत है वो अरबी से मिलता है, ये एक और इम्पोर्टेंस है। इसी तरीके से पंजाबी की बात करें तो पंजाबी के अंदर डिफरेंट पोइट्स की बात कर लें। पंजाबी सीएसएस के अंदर भी उसके अंदर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के अंदर पढ़ाई जाती है। पश्तो की बात करते हैं तो आप पश्तो की मौलाना अब्दुल कादिर की बात करें, डिक्शनरी की बात करें जो पहले उनको बनाई गई थी। उसके मैगजीन्स की बात करें, बलूची की बात करते हैं तो उसमें मैगजीन्स की, जर्नल्स की, खैबर चैनल की बात करें, सो यू कैन टॉक अबाउट द डिफरेंट पॉइंट्स। थर्ड जून प्लान सिंपल है, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था इन इंडिया, और उसको भेजा इसलिए गया था कि वो इंडिया के अंदर मुसलमानों को और हिंदुओं के दो अलग अलग इसको इंडिया को पार्टीशन करे, मुसलमानों का अलग मुल्क हो जाए और इंडिया का अलग मुल्क हो जाए। सो ये एक मेन पर्पस था। तो थर्ड जून प्लान के अंदर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ये प्लान दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वुड बी द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स। दोनों हम दो गवर्नमेंट्स बनाने जा रहे हैं, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। दोनों के एग्जेक्टिव जो होंगे वो गवर्नर जनरल होंगे, दोनों अपने गवर्नर जनरल खुद इलेक्ट करेंगे। दोनों गवर्नमेंट्स जो होंगी वो डोमिनियन स्टेट होंगी उस वक्त तक जब तक वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं बना लेते। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा जब तक कि वो उनका अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता। और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। सिल्क लेटर मूवमेंट मैंने अभी तो बता दिए यार। एनेक्सेशन पंजाब की हुई थी 1948 के अंदर, सॉरी 1848 के अंदर। और वो इसलिए हुई थी, 1838 के अंदर रंजीत सिंह मर गया था। 1842 के अंदर पहली सिख जंग हुई, 1842 या 43 के अंदर, जिसको बैटल ऑफ अली वॉल भी कहते हैं, फर्स्ट सिख बैटल भी कहते हैं। उसके बाद उससे पहले तक देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप गोइंग ऑन इन बिटवीन द पंजाबीज एंड द ब्रिटेन। लेकिन जब ये पहली सिख बैटल हुई उसके बाद दोबारा एक और चांस दिया ब्रिटिश ने कि हम अभी भी चांस दे रहे हैं, आप हमसे लड़ाई मत करें। एंड एक और ट्रीटी हुई जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। और लेकिन सिख बाज ना आए, फिर एक दोबारा जंग की जिसको सेकंड सिख बैटल कहते हैं 1848 के अंदर। उसके अंदर भी सिखों को डिफीट हुई एंड अल्टीमेटली द पंजाब वाज अनेक्स्ड। सिंध को अनेक्स करने की वजह ये थी कि ब्रिटेन ने अपने कुछ ट्रुप्स जो थे वो भेजे थे अफगानिस्तान, ताकि वो ये देख सकें कि क्या रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो जब उन्होंने ये देखा तो वहां पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था रंजीत सिंह का, और रंजीत सिंह की फोर्सेस वहां पर अफगानियों के साथ मिलकर काम करती थी, बल्कि गवर्नमेंट बनाती थी। तो वहां पर उन ब्रिटिश फोर्सेस को मार दिया गया और सिर्फ एक बंदा बाकी बचा। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है केसरिया, तो वो भी देखिएगा। उसके वो खैर दैट इज एन एग्जैजरेटेड मूवी, लेकिन कुछ इवेंट्स हैं उसके, अक्षय कुमार की मूवी है वो। बहरहाल, तो उसके ऊपर जब एक बंदे को वापस भेजा कि जाओ जाकर बताओ ब्रिटिश को कि हमने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है, यू आर द सुपर पावर बट तुम हमसे नहीं लड़ सकते। तो ब्रिटिश को बहुत ह्यूमिलेशन फील हुई। सो अल्टीमेटली ब्रिटिश ने क्या किया कि आ, कि, कि दुनिया को ये शो कराने के लिए कि हम भी अभी तक बहुत ताकतवर हैं, सो दे वेंट टू सिंध। सिंध में उन्होंने एक अपने जनरल को भेजा, उसका नाम था चार्ल्स ग्रांट। आई थिंक चार्ल्स ग्रांट, नहीं नहीं चार्ल्स ग्रांट नहीं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। मुझे अभी जेन में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, नोट्स में लिखा हुआ है। तो उस अपने जनरल को भेजा गया, उसने सिंधी अमीज को प्रोवोक किया। और सिंधी अमीज भी ऑलरेडी एक ट्रीटी फ्रेंडशिप में थे, लेकिन उस प्रोवोकेशन के बाद सिंधी अमीर उनसे लड़े, अल्टीमेटली उनसे फाइट ना कर सके एंड द सिंध वाज अनेक्स्ड टू। तो ये दो ही एनेक्सेशन थी जो कि हुई थी, पंजाब एंड एनडब्ल्यूएफपी एंड सिंध।
14 के 14 पॉइंट्स मूसा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो पॉइंट्स याद करें जो कि रिपीट हो रहे हैं. Yes, there will be a source based question शेयर तारिक. एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन भी होगा सोर्स से और एक पिक्चर वाला क्वेश्चन भी होगा जो कि सोर्स भी है. अल्लामा इकबाल जरूरी है. यस यस चार्ल्स नेपियर मूसा. दैट्स ट्रू. चार्ल्स नेपियर वाज द पर्सन. और कोई सवाल आप लोगों के? Don't have any questions? So should we end up this? Okay, there is a question. Nehru report. Are you talking about Nehru report? Yes. So हुआ ये 1928 के अंदर after the rejection of Simon Commission by the Indians, तो लॉर्ड बर्किनहेड जो कि इस वक्त के वायसरॉय थे, उन्होंने एक चैलेंज दिया इंडियंस को कि if you do have the capability, तो आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, but that has to be agreed unanimously. वो तमाम इंडियंस उसको एक्सेप्ट करें, वो ऑल द कम्युनिटीज इन इंडिया इसको एक्सेप्ट करें, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे. तो नेहरू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड देयर वाज एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ. तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम पार्टीज को बुलाया गया. तो जब तमाम पार्टीज आई तो मोतीलाल नेहरू ने अपने बड़े डिफरेंट कॉन्वर्सेशन हुई, डिफरेंट डायलॉग्स हुए, डिफरेंट वर्किंग कमेटीज बैठी, उन लोगों ने डिफरेंट बातें की. तो फिर जो एंड में रिजल्ट निकला, तो उस रिजल्ट के अंदर हुआ ये कि दैट रिजल्ट वाज एक्चुअली Motilal Nehru said that this has to be a bicameral legislature. That was accepted by the Indians, all of them. There was no issue in it. It should have been a federation, federal government होगा, कबूल था. But in federation, center would be more stronger. Center would be stronger. That was not acceptable to Jinnah. Jinnah said that if the center would be stronger, then the Indians, then the Hindus would be more stronger because they're a majority. So there has to be a provincial autonomy. So that was not acceptable holistically by the Muslims. So that was first thing, which was a disagreement point. Motilal Nehru said there should be no separate electorate because of the thing that this separate electorate would divide the communities on the religious grounds, and that is not acceptable. Sindh can only be separated from the Bombay presidency if that is a financially viable option. Reforms has to be done in NWFP, but not in Balochistan. So these were the rejection points. These were the points which were not accepted by the Muslims. Then he said that there has to be 1/4 representation of the Muslims in the central legislature. Again, that was not accepted by Muslims. So mostly Jinnah did not attend uh, this Nehru report, all the conferences, because his beloved wife was terminally ill and he was taking care of her. So when he came back after her death, so then he was quite angry and he was infuriated by the point that none of the Muslims had argued against all of these reforms. So then he presented his own amendments. So there were 4 to 5 main amendments, जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं. But these amendments were not accepted by the Hindus. Nehru report was not accepted by the Muslims, so it was not unanimously accepted by all the communities. That is why then Jinnah's 14 points came into being. Fiza, you already have the hair like me, so you already have it. Okay, Gandhi Urban Pact के अंदर first RTC के बाद there was a scenario in which the British came to know that if the leader of the majority party, if the majority party, which was Indian National Congress, would not be coming, which would not be participating in
in the roundtable conferences, what would we tell the world? That majority population party is not attending it and they're not the part of the dialogue. So we should make them attend this roundtable conferences. So in order to do all of this, roundtable conference had to happen, and because this was the clause of the Simon Commission, so Lord Irwin, against the desire of Winston Churchill, he went to the jail and he met Gandhi. He said, Gandhi, he said that if you would like to come into the second RTC, then what are your demands? So Gandhi then given his demands, and these demands were like all the persecutions should be ended, all the persecutions against the Indians should be ended, all the acts which curb the activities of the Indians should be avoided, Salt Act has to be removed, all the prisoners which are not involved in the violent activities should be released. So all of this was then, these were approved demands, and then in Gandhi attended the second RTC. So these are some of the points that Gandhi is involved. What else? Anything else? Okay. So should we end this live stream? ओके, गांधी जिना टॉक्स। गांधी जिना टॉक के अंदर 1944 के अंदर गांधी को रिलीज किया गया था ऑन द हेल्थ ग्राउंड, एंड देन व्हेन गांधी वाज रिलीज फ्रॉम द जेल, ही मेट जिना इन हिज बॉम्बे हाउस। बॉम्बे, उसने बॉम्बे वाले घर में मिला, एंड देन गांधी ने अपनी कुछ बातें रखी जिना के आगे। ही सेड दैट he should be accepted as the sole spokesman of the India, जो गांधी जो जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ही सेड के पार्टीशन की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, पहले ब्रिटिश को आउट करते हैं, तो वो भी बात एक्सेप्टेबल नहीं थी। देन ही सेड के सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो जो मैंने भी आपको बताया कि जिन्ना कभी भी इस बात से राजी इसलिए नहीं था क्योंकि जिन्ना ने कहा था कि प्रोविंसेस हमेशा अगर ऑटोनमस नहीं होंगे तो फिर हम हिंदुओं के रहमो करम पे आ जाएंगे और हिंदू हमारे साथ वो सलूक करेंगे जो पहले वो हमारे साथ कर चुके हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल पॉइंट नहीं था। फिर गांधी ने कहा कि जनाब पार्टीशन जो है अगर आपने करनी है तो फिर बंगाल और पंजाब की भी पार्टीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। हालांकि पंजाब और बंगाल दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, ये पूरे के पूरे मुसलमानों को मिलने चाहिए थे, बट अगेन दैट डिवीजन वाज बिकॉज ऑफ द of Gandhi's demands कि ये डिवीजन करनी है। These are some of the points in the Gandhi talks. Simon report, जॉन साइमन भेजा गया 1927 में इंडिया के अंदर, इसलिए भेजा गया ताकि वो ये सोच सके, ताकि वो ब्रिटिश के अंदर, हुआ ये था एक्चुअली कि उस वक्त कंजर्वेटिव गवर्नमेंट हुकूमत में थी ब्रिटेन के अंदर, तो उनको डर ये था 1919 के जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स थे, उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर एक क्लॉज ये थी कि हर 10 साल के बाद साइमन कमीशन, हर 10 साल के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू होगा। तो 1929 के अंदर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू होना था, और 1929 में
कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को डर ये था कि लेबर गवर्नमेंट आ जाएगी, लेबर गवर्नमेंट इनको रिप्लेस कर देगी, और अगर लेबर गवर्नमेंट ने इनको रिप्लेस कर दिया तो बिकॉज दे आर प्रो इंडियन नेशनलिज्म, तो वो इंडिया को बहुत सारे राइट्स दे देंगे, एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द ब्रिटिश एट ऑल। ये ब्रिटिश को कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को नहीं मंजूर था। तो इसलिए 2 साल पहले ही उन्होंने जॉन साइमन को बुलाया अपने 7 मेंबर कमेटी के साथ, जिसमें कोई भी इंडियन नहीं था, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा जनाब फेडरेशन होगी इंडिया, डायरेक्ट को खत्म कर दिया गया, गवर्नमेंट गवर्नर जनरल की पावर्स को रिड्यूस किया गया, लेकिन गवर्नर के पास फिर भी वीटो का हक था। 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया जाएगा, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। रिफॉर्म्स टू बी इंट्रोड्यूस इन एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। और 1/3 रिप्रेजेंटेशन की जगह 1/4 रिप्रेजेंटेशन होगी मुसलमानों की। दीज आर सम ऑफ द क्लॉजेस व्हिच वर एग्रीड अपॉन एंड नॉट एग्रीड अपॉन इन द साइमन कमीशन। तो ये इसके रिजेक्शन पॉइंट है। सबसे बड़ा रिजेक्शन पॉइंट तो एक ही है कि इट वाज ऑन ऑल वाइट बॉडी, इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। दूसरा ये है कि मुसलमानों के डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा था। तीसरा ये है कि इंडियंस को, हिंदुओं को सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहिए थी, जो कि साइमन कमीशन ने नहीं दी। यार इंपॉर्टेंट चीजें मेरे ख्याल से मुगल डिक्लाइन, रिलीजियस रिफॉर्मर्स, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश अराइवल, सेक्शन 1 में से। सेक्शन 2 में से पार्टीशन ऑफ बंगाल, खिलाफत मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रिवर्सल ऑफ पार्टीशन, ये दोनों। देन खिलाफत मूवमेंट, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, लखनऊ पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट, RTCs, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड लाहौर रेजोल्यूशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, और गांधी जी टॉक्स, ये इंपॉर्टेंट। ये इन नटशेल मैंने आपको बता दिया। Ahmed Sadiq, I remember you. You were one of my students in an online class. How are you? Thank you, thank you. So I'm about to cut my hair now because it's too long. It's too lengthy now. So my mother is against the lengthy hair. So that's nice. That's nice. So Sadiq, what are you doing nowadays? Type what? Mohib, should I type what? Okay, that's nice. Ahmed, that's nice. So let's the fingers be crossed that you would do excellent job in the A-levels exams. My prayers are with you. God bless you. Okay, let me type that. यार लिख लो ना, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप लिखो पेपर के ऊपर। मुहिब लिख लो ना, पहला लिखो मुगल डिक्लाइन। Musa, can you please write that? Okay. Thank you, Ahmed. Thank you for such kind words. Love you. अब रुको मुहिब, मैं लिख रहा हूँ, ठहर जाओ।
So these are the important topics. Done? Introducing my son, Mustafa, and उधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ. And my daughter Rida. ये important है, yes. और ये पता है पापा का है और पता है कुछ होता है ये नेल कटर आपके लिए सीक्रेट चीज है. You welcome Dayan, welcome Mohib. Anything important still अगर आपको लगे कि कुछ important है जो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो you can always through a voice message in the group or in the personal window. I'll be answering that. और ये देखो ये देखिए गाइस मैं इधर से लोगों को मार. ठीक है जी, let's now end this conversation, okay? Thank you. Thank you guys. Guys नहीं Okay, Musa. Okay, Moaz. Yes, share. I already told you that there will be a picture in the paper. There will be a source B question. Allah Hafiz, Musa. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Mohib. Okay, bye bye. Take care. मूसा तो उसका Allah Hafiz, Dayan. बोलते मूसा आती. Okay, Allah Hafiz. Take care. कैसे बंद करते हैं? हाँ. बाबा क्या मैं इस शब्द में नाखून काट सकती हूँ? आप नहीं काट सकती, मामा काटेंगे. कैंची होती है बच्चों के नाखून काटने वाली? Okay जी, bye bye the ones who are in the session right now. Take care, bye bye. Rita, bye bye कर दो. Bye bye कर दो. बाय 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 ऐसे हाथ रेस करो. बाय बाय बाय. Okay guys, bye bye. बाय बाय गाइस. Okay.